the schools, a larger share of the children remained outside the schools. Today, most of the children are in the schools, but we are facing a phenomenon that is called as schooling without learning. And that is something that we have to address, and that is a challenge for many of us. And from this point of view, I'm happy that we have very good, excellent, experienced speakers in this session. I should also like to say that COVID-19 has changed, introduced a lot of changes. There is no alternative but to change. What one finds is that technology-intervened learning has become a common practice in all the schools. And therefore, it is very important to see that it is not only a transaction between teachers and students or a discussion between teachers and students. Today, what we speak, what we teach, what we learn is an globally connected activity. So that is a dramatic change that we find, because even the lecture that is taking place or even the discussion that is taking place now is recorded and it can be seen. And online, many of the online courses are also recorded, and there is a possibility of seeing and seeing again and again. So therefore, it is a globally connected activity. One has become more specific about it, and the preparations are very different. The way the teachers have to prepare for the classroom, that is very different. The way we interact with the students, that is very different. And also the socialization process, which is also part and parcel of an schooling process, is perhaps getting very much affected. Many children are feeling very uncomfortable to remain in the households for 1 year, not in a position to go to the school, meet their friends, and socialize with the teachers and their friends of their own age group, So therefore, COVID has introduced a new dynamics, and also open possibilities of relying on technology-related, technology-mediated teaching learning processes, and introduce many reforms, not only in teaching, but also in the learning processes, classroom atmosphere, and also in terms of the assessment of the students. So it's a great change that you're trying to see that. And I am very happy that we have very well experienced people, including teachers who are teaching, not only those who tell them how to teach, but also those who are actively engaged in teaching in this process. And I have with me the co-chairperson, Dr. T.S. Joshi, Director of Gujarat SCRT. I will request him to make a few remarks before I come to Joseph Emmanuel. Professor Dr. Joshi Saab, this is your turn. Thank you, sir. दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो इनोवेटिव प्रैक्टिशनर के लिए इनोवेटिव पेडागोजी के बारे में जो एनईपी के चैप्टर 4 में बहुत विस्तृत तरह से दिखाया गया है। तो हमारे यहाँ कुछ प्रयास बारे में बात करूंगा, 5 ही मिनट बात करूंगा। 95 से हमारे यहाँ यूनिसेफ के सहयोग से ऐसे जो इनोवेटिव टीचर्स थे उनका फेस्टिवल मानो या शेयरिंग वर्कशॉप को इनफॉर्मल वे से शुरू हुआ था, लेकिन पिछले 8 साल से हम रेगुलर तौर पे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल का इनोवेटिव टीचर जिसने भी पेडागोजी में इनोवेटिव प्रैक्टिस की है उनका लिए शेयरिंग वर्कशॉप रखते हैं। इसी वर्कशॉप में हर स्कूल से टीचर आते हैं और टीचर ही रेटिंग करते हैं कि कौन सा इनोवेशन उनको सबसे अच्छा लगा। तो उनका रेटिंग के आधार से हम स्टेट लेवल का एजुकेशन इनोवेशन फेस्टिवल, जिसमें बहुत सारे इनोवेटर्स आते हैं, तजज्ञ भी आते हैं, और उनका वो शेयरिंग वर्कशॉप होता है। तो इस एक अच्छी प्रैक्टिस में हमें आज तक साथ मिला है यूनिसेफ, IIM अहमदाबाद और SR के CSR से हमें कुछ फंडिंग भी मिल रही है। हर साल उनके फंडिंग के हेल्प से हम वो एजुकेशन इनोवेशन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। लास्ट ईयर से हमें श्री अरविंदो सोसाइटी के रूपांतर के साथ भी MOU हमने किया। तो टीचर अलग अलग तरह के लोकल जो नीड है उनके हिसाब से क्वालिटी अचीव करने के लिए तो वो कुछ ना कुछ करता है। तो बहुत अच्छा प्रयास, मेरे ख्याल से वही अच्छा है। जो लोग कुछ काम करते हैं उनके लिए एक थियरी बनाई है मेरे प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी IIM अहमदाबाद में। तो वो बोलते हैं कि कुछ
नहीं करने की उत्सुकता जो होती है, अपने क्लास के बच्चे ठीक से क्यों नहीं सीख रहे हैं, तो कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, उत्सुकता से ही शुरू होता है कुछ करने का उत्साह, और ये उत्साह से ही मिलती है ऊर्जा, और जब ऊर्जा लगती है तो कोई थकान नहीं महसूस होती, उत्साह और ऊर्जा मिलके हम करते हैं, ले जाते हैं उमंग तक। तो इसी सिलसिले में प्रोफेसर आर.एच. दवे साहब जो थे, उसने स्टूडेंट की टीचर की 5 निष्ठाएं बताई गई थी, उसमें जो 5वीं निष्ठा थी उत्कृष्टता निष्ठा, कि हम कर रहे हैं तो क्यों कम कर रहे हैं, तो अपना ईगो पूरा उत्कृष्टता की ओर लगाना है, तो इस टाइप का एक पूरी श्रृंखला बनती है। तो टीचर्स को ऐसा लगता है कि मान लो कोई भी चीज, हम क्लासरूम में भी बच्चों को बोले कल हम टूर में जाने वाले हैं, तो बच्चों को इसके लिए अलार्म रखना नहीं पड़ता है, उससे पहले वो सुबह में उठ जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उनको उत्सुकता है, उत्साह है, उसकी ऊर्जा भी है, थकान भी नहीं लगती है। ये स्कूल में 5-6 घंटा पढ़ के जो उसको थकान महसूस कभी कभी होती है, ऐसी थकान उसको टूर में जाने में, कुछ एक्टिविटीज करने में, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करने में बच्चों को या टीचर को नहीं लगती है, क्योंकि वो पूरी जो श्रृंखला बताई गई, उत्सुकता, उत्साह, उत्साह से ऊर्जा, ऊर्जा से उमंग, उमंग से उत्कृष्टता तक जाने के, तो वही सोच लेके हम पूरे राज्य में 8 साल से करीबन रेगुलर तौर पे वो एजुकेशन की जो पेडागोजी, जो इनोवेटिव टीचर है, उनके लिए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। लास्ट ईयर लॉकडाउन में भी हमने ऑनलाइन वो सभी प्रयोग किया, और मेरे ख्याल से सबसे अच्छी चीज हमें लॉकडाउन के पीरियड में मिली, जब टीचर अपने बच्चे तक नहीं पहुंच सकते थे, इसी वक्त टेक्नोलॉजी का जो उपयोग किया है, जिस टीचर को कभी व्हाट्सएप का भी यूज नहीं किया था, वही टीचर वर्चुअल क्लास में पढ़ा रहे। तो एक टाइप का कोविड के समय में एक ऐसा माहौल बन गया, हर टीचर टेक्नोलॉजी हो गए, और अभी जो नया एनईपी भी आया, और कोविड के बाद जो मेरी क्लासरूम रहेगी पूरी ब्लेंडेड मोड पे रहेगी, उनके लिए पूरा वातावरण हमने कोविड टाइम में हर जगह पर बना है, तो उनका लाभ भी मिलेगा। आज जितने भी प्रैक्टिशनर बात करेंगे उसकी प्रतीति भी हमें होगी, तो अब प्रैक्टिशनर और स्पीकर्स को हम स्वागत करते हैं, और इनोवेटिव प्रैक्टिस की जितनी जरूरत आज है पहले कभी नहीं थी, क्योंकि आज हर टीचर को ऐसी आदत नहीं है आर्ट इंटीग्रेशन कैसे करना है, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन करना है, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ कैसे करना है। स्टोरी का यूज तो ज्यादातर टीचर या जो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में जो पढ़ा रहे हैं टीचर, वो वही समझ रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग तो बच्चों का ही काम है, प्री स्कूल में और पहली दूसरी कक्षा में होना चाहिए, लेकिन जो केस स्टडी है उनके आधार से वो कैसे पढ़ा सकते हैं अपने क्लास, और छोटी छोटी ड्रामा का टैबलोज बना के जो बताते हैं, आधी स्टोरी कहते हैं, आधी ड्रामा करते हैं, और हायर सेकेंडरी के जितने भी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, वाणिज्य व्यवस्थापन, इवन कंप्यूटर, उनके भी बहुत सारे प्रयोग हमको मिला है। इन सब टीचर को भी मैं आदर करता हूँ, उनका सम्मान भी करता हूँ, और आज जो नए प्रैक्टिशनर की कहानी सुनेंगे, इससे पूरे देश में दिशा मिलेगी। सबका आभार। थैंक यू। Thank you, Dr. Joshi. That is a very good introduction to some of the innovative areas and activities that you are introducing in Gujarat, and also many of them have its own wider implications to other regions in the country. Thank you very much for that. Dear friends, what we try to do is that Joshi Sahab and myself will together lead to the next round of discussions. And the arrangement is that we'll be having 10 minutes of presentation by Mr. Joseph Emmanuel, and that will be followed by, that's a presentation that will be followed by the 3 speakers who are experienced in teaching at the primary level and at the school level, and each of the speakers will be given 15 minutes. Then we'll have a lot of discussions. Okay, so may I invite the first the presenter, Mr. Joseph Emmanuel, who is director especially academic in the CBSE, and I'll be very happy to welcome you to this august audience to make your presentation. This time is yours, Mr. Joseph Emmanuel. Thank you so much, Professor Bagis.
Secretary School Education and Literacy, Madam Anida Karwal, all the senior officers of the Ministry of Education, State Education Department, Dr. Joshi, Dr. Wagis, my fellow panelists, and all the principals and teachers and school leaders who are listening to me on this platform. Sabko namaskar. My presentation on innovative pedagogy, enjoyable and engaging learning, is based on the best practices which are to be adopted by schools, and what are the good characteristics of innovative pedagogy, what are the recommendations in the new national education policy, as well as what CBSE is doing to promote innovative pedagogy in the classroom for its affiliated schools. So thank you so much for this opportunity, and I am coming to my presentation. Yes, now we can see. Please go ahead. Thank Dr. you. Emmanuel. Okay, Thank you. we can see. As every one of us knows, pedagogy is the heart of teaching and learning. The concept and idea, the syllabus curriculum, that needs to be taken to the students through the approach adopted by the teachers in the classroom. So the more innovative the teachers are, the more effective will be the classroom transaction. At present, as the chair rightly mentioned, Dr. Varghese has rightly said that from 90 onwards, there is continuous transformation in the teaching and learning is happening in our classroom. This needs to be accelerated, and we need to leave the factory mode of education behind us for good. So we need to prepare our students for successful life. The pedagogy need to connect the concept along with the real life situation. This should promote lifelong learners through the classroom transaction, as well as that should also promote various social skills and 21st century skills in the classroom. The world is very fast changing. It is interconnected and very rapidly moving with technological advancement. So according to the change in the time, we need to bring changes in the classroom transactions also. So the time has come to change. If we want something we never had in our life, we have to do something we have never done before. So we should prepare our children to do something challenging, something engaging, something that will make them lifelong learners as well as problem solvers in life. So we don't need some old thinking or some old results. Whereas in that place, we need teaching and learning with a transformation. So what we need is innovation in teaching and learning. We need change in the classroom transaction. How to bring those changes in the classroom? Let us be very innovative. And in that process of innovation, one caution, we should not get lost in the translation of innovation in the classroom. It is the quality of our approach that makes the biggest difference in our learners. The quality, that is the essence in bringing innovative pedagogy. So the key to change in the classroom transaction is bringing innovation in the pedagogy. The pedagogy should be purposeful. It should bring it should be created with imagination. It should bring in excitement and adventure among the learners. It should also promote resilience as well as confidence in the learners. So a shift in pedagogy is envisaged. So innovation has to be set on a firm base of passion, dedication, joy, curiosity, and creativity. These are all essentials for bringing innovative pedagogies in the classroom. So let us take a look at the essential steps to adopt innovative teaching and learning. So what are the steps? So the first step is challenge your beliefs and ideas. So we need to change from the past. We need to change from what we adopt at present in the classroom.
So inquire into your beliefs, values, and mental model of education. That is the first steps towards innovative pedagogy. Define the purpose of the content and the key outcomes of the curriculum transaction. There is a need to evaluate your current teaching and learning practices. Apply some changes and analyze the effects. Synthesize to create an innovative teaching pedagogy. So these are the essential steps towards bringing innovation in the classroom. So let us see one by one what are the importance of each strategy. To create a learning culture, that's very important. Create a learning culture of inquiry into the classroom where students feel empowered to act in their own learning. That is the first step towards innovative pedagogy. Next is enable with deep learning. The innovative pedagogy should enable the learner to create an even deeper learning culture of inquiry than has done in the past by having students engaged in relevant, meaningful, and purposeful learning journeys. That is the next step towards innovative pedagogy. The fourth step is empower students. The pedagogy should empower students with a capability to make decisions about their learning and work flexibly on what they need in their own time and in their own way. The next is manage innovation in collaborative spaces. Engage, enable, and empower students to succeed in a collaborative space by innovating, negotiating, collaborating, and creating. That is the next step towards innovative pedagogy. So let us embark on a journey of bringing innovation in pedagogy for joyful learning. What are the highlights in the new National Education Policy 2020? The policy clearly says that learning should be holistic, integrated, inclusive, enjoyable, and engaging. It should encourage 21st century skills such as critical thinking, creativity, scientific temper, communication, collaboration, ethics, and digital literacy. The policy further says, adopt experiential learning, including hands-on learning, art-integrated and sports-integrated education, storytelling-based pedagogy. So there needs to be a shift in the classroom transaction towards competency-based learning and education. So there is a clear mandate given by the new National Education Policy. So innovative pedagogies for powerful and joyful learning, it is a must. So OECD's researchers, Penigoa and Instance, they have brought out a research paper on innovative pedagogy, which clearly says that pedagogy is at the heart of teaching and learning, preparing young people to become lifelong learners with a deep knowledge of subject matter and broad set of social skills requires a better understanding of how pedagogy influences learning. So what are the various forms of innovative pedagogies that can be applied in classroom? The first one is experiential learning, project-based learning, crossover learning. The second model is embodied learning, art-based learning. Third is gamification, games-based learning, learning through storytelling. Blended learning, flipped classroom is the next model. Computational thinking, algorithmic thinking, coding, these are all modern ways of teaching and learning that can be adopted in the classroom. The next model is multi-critical literacies, learning through collaborative argumentation. Let us see what are each one of these category of innovative pedagogy says. Project-based learning, teaching method in which students learn by actively engaging in real, wide, and meaningful projects. Authentic and engaging issues or topic, student-driven learning supported by teacher, development of 21st century skills, learning from variety of resources, interdisciplinary learning, equal emphasis on process and outcome. These are all various features of project-based learning. Crossover learning, these are types of learning in informal settings such as museums, parks, fields, after-school clubs, homes, meetups, etc. It enriches knowledge by providing diverse experiences from everyday life, thus sparking
further interest and motivation to learn. The experiences can be deepened by adding questions and knowledge from the classroom. So this crossover learning is very good for creating enquiring minds among the students. It exploits the strength of both environments, formal and informal, and provide learners with authentic and engaging opportunities for learning. Art-based learning, the purposeful use of artistic skills, processes, Emmanuel, and 2 more minutes. 2 more minutes. Yeah. As educational tools to foster learning in non-artistic disciplines and domains. So, art-based learning, it skill enhancement, develops motor skills, language skills, social skills, decision-making, risk-taking, and creative problem-solving skills. Easy understanding. Art-based learning presents difficult concepts visually, making them more easy to understand. Engagement of all students reaches out to students who might not otherwise be engaged in classwork. Connects with culture and heritage. Connects students with their own culture, heritage, as well as wider concept. Game-based learning. This is another strategy of learning. So it is also very good for making the children engaged in the classroom. Storytelling pedagogy. This is yet another form of pedagogical practices, innovative pedagogy. It creates a stronger connection with the students, relaxes students and lowers barriers. It engages and holds learners' attention, gives difficult concepts in real context, encourages students to share their own experiences. So flipped classroom is another model. This is the best way to engage older children to connect with life. Computational thinking. This is another form of innovative pedagogy, a powerful approach to thinking and problem solving. Collaborative argumentation is another model of innovative pedagogy, a setting where students work together to construct and reflect on their argument by asking each other questions and checking on each other's explanation. It also allows students to refine ideas with others, work together to establish, to refute claims. It creates a lot of collaborative skills in the students. So what are the innovatives by CBSE to promote innovative pedagogy, initiatives by CBSE to promote innovation in the teaching learning process? So board has designated all the principals as pedagogical leaders and guided them to prepare annual pedagogical plans. So this will give a base to the school leaders to lead the teachers and as well as the learners towards innovative pedagogy. Implementation of experiential learning pedagogies like art and sports integrated learning, storytelling and gaming. Introduction of art integrated project work for classes 1 to 10 compulsorily in the classroom. For your information, last year more than 1.3 crore children participated in this project work, and it is getting more and more momentum in the days to come. Introduction of courses on design thinking, coding and data science. That is another initiative of the board. Capacity building programs on innovative pedagogies, side-by-side boards. Center of Excellence for Teachers is engaged in the capacity building of the teachers. So if we want to keep the momentum in the days to come, we need to continue with the efforts of teaching, learning and bringing innovation in the classroom. We should not get left behind. I end with a famous quote from Mahatma Gandhi: "Be the change you wish to see in the world." Thank you so much. Thank you, Dr. Emmanuel, for a very, very crystal clear presentation and various steps that you have tried to elaborate. Certainly, your idea of creating a learning culture that forms the basic center around which all other activities that you elaborated revolves. That's a fulcrum around which all other activities that you elaborated revolves. Your critical thinking, curiosity, and creativity. How do we induce or how we introduce this in the teaching learning process is very important. And essentially, collaborative. I like the idea of collaborative argument and also the picture that you showed. The students sitting together and argue. And they have a famous book called The Argumentative Indian by
Professor Ekison, who is a Nobel laureate, So I think that is a very important one. And how to make learning joyful and create a learning culture in the classrooms, among the students, between the students and the teachers. Thank you very much for this excellent presentation. May I request our speakers now? I will request first Mr. Naresh Kumar, is a lecturer in physics in the district Mandi, Himachal Pradesh, and he has done quite a lot of innovative programs. He is organizing a mathematics camp every year. Math science practical lab is developed by the students, and he is helping and supporting, and use of advanced technology in maths and science. And he has done quite a lot of innovative activities in the school with the students, and has brought out a lot of changes in the pedagogical dimension. So we will be very happy to listen to you about your innovative experiences and the way you introduced it in the school, and what you feel about are the effects of such interventions or innovations that you made. Thank you very much once again. So may I request Mr. Naresh Kumar? Yes, sir. Yes, thank you, sir. Please Go ahead. play my presentation. Yes, please. शिक्षक पर्व के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सब शिक्षाविदों को नरेश कुमार का सादर नमस्कार। जैसे ही मैंने एज ए टीचर हिमाचल प्रदेश के अति दुर्गम क्षेत्र में ज्वाइन किया, मेरी नजर स्कूल मैगजीन पर छपे एक बच्चे के आर्टिकल पर पड़ी, और उस आर्टिकल में लिखा था, अलजेब्रा की भूल भुलैया हो या भिन्नों का मकड़ जाल, कोणों का लंबा घुमाव हो या अंकों का कदम ताल, देख गणित के तीखे तीखे लंबे दांत, डर के मारे सब बच्चों का जीना है बेहाल। छात्र के विचारों को पढ़कर मैं अंदर तक हिलसा गया और सोचने लगा कि बच्चों के मन में मैथ के प्रति इतना भय है, और आप तो जानते ही हैं कि बच्चों के मन में ही नहीं, बड़ों के मन में भी और समाज में भी मैथ का बहुत ज्यादा डर होता है, जो समय समय पर दिखाई देता है, जिसे हम मैथ फोबिया कहते हैं। मैंने कुछ बच्चों से बात की तो पता चला कि अगर मैथ समझ ना आए तो रट्टा मारकर ही याद कर लो। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि हमारी पाठशाला में बच्चे प्रतिदिन 4 से 6 घंटे पैदल चलकर आते हैं, तो पढ़ने में बहुत समस्या होती है। और जो हमारे साथ वाला स्कूल है, वहां तो मैथ के टीचर ही नहीं थे, तो बच्चों की मैथ साइंस की लर्निंग प्रॉब्लम्स जो मैंने उनका बेसलाइन टेस्ट लिया, उसमें साफ साफ नजर आई। इसलिए गणित व विज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़कर एंजॉयबल एंड एंगेजिंग लर्निंग के लिए हमने कुछ पेडागोजिकल प्रयोग किए। और सबसे पहला मैथ कैंप। मैथ कैंप में हर वर्ष नए सत्र की शुरुआत में सभी कक्षाओं को एक साथ मिलाकर मैथ कैंप का आयोजन करना, बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बनाकर उन्हें बेसिक मैथ के सभी कंसेप्ट को या तो नए सिरे से सिखाना, अगर बच्चों को आते हैं तो उन्हें रिफ्रेश करवाना। ज्यादा बच्चे होने की स्थिति में पीयर लर्निंग और ग्रुप लर्निंग तकनीक का प्रयोग करना। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। आप देख रहे हैं बच्चे एक दूसरे से सीख रहे हैं और सीख भी खुश होकर रहे हैं। मॉर्निंग असेंबली में भी प्रतिदिन मैथ का कोई ना कोई कंटेंट अनिवार्य रूप से बताना। इस मैथ कैंप से बच्चों का बेस स्ट्रांग होता है और स्टडी बेटर हो जाती है। जब बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं तो एंजॉय भी करते हैं और एंगेज भी करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप दिखाते रहें साथ साथ। बच्चे एंगेज भी हैं और एक दूसरे से सीख भी रहे हैं। एक दिन 10th क्लास में एक मैथ का क्वेश्चन आया कि सिलिंड्रिकल गुलाब जामुन में चीनी की मात्रा पता करो। तो हमने बच्चों से पूछा कि क्या आपने सिलिंड्रिकल गुलाब जामुन देखे हैं, तो बच्चों ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। कुछ बच्चों ने तो स्फेरिकल गुलाब जामुन भी नहीं देखे थे। इसलिए पहले हमने बाजार जाकर सिलिंड्रिकल गुलाब जामुन बनवाए, बच्चों को दिखाए, खिलाए और उसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाए।
उसी समय हमने मैथ साइंस लैब बनाने का फैसला कर लिया। मैथ साइंस लैब भी ऐसी जो सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई हो, बच्चों द्वारा खुद विकसित की गई हो, रेडीमेड नहीं। इसके लिए हमने सबसे पहले 6 से 10 तक सारे टॉपिक सर्च किए और बच्चों में बांट दिए, ताकि बच्चे उसके ऊपर डिटेल स्टडी करें, प्लानिंग करें, योजना बनाएं कि किस तरह का टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाया जा सकता है। बाजार से हमने सामान लाकर बच्चों को उपलब्ध करवा दिया और शुरू हो गई हमारी मैथ साइंस लैब बनना। सारे बच्चे अपने काम में व्यस्त थे, एंगेज थे और इतने खुश थे, क्योंकि जब बच्चा स्वयं काम करता है तो बहुत ही खुश होता है। और हमारे इस काम में अभिभावक और पीएन तक भी हमारे साथ जुड़ It गए। seems there is some technical problem. जी सर। We'll wait for a minute. And if the connection is not getting, if you are not getting connected, we'll move to another next person. He is very clear, Dr. Varghese. I can see the slides. I can hear him very clearly. I think your connectivity is a problem. All of us can hear him. Clear. ओके मैम। तो पेरेंट्स और जो पीएन है वो रात को 8 बजे तक We lost हमारे the connection. निर्माण कार्य में सहयोग देते रहे। आप देख सकते हैं सब एंगेज भी हैं और एंजॉय के साथ सीख Friends, भी रहे हैं। unfortunately, it was a very interesting presentation with all the details of the Dr. innovations Varghese, that he introduced. Dr. Varghese, But unfortunately, we are not in a position to hear him again continuously. There is some connectivity problem. Santosh, can you give him a call, we will because move he is the to one without the next connectivity, speaker. not us. And if time permits, and if the connection Dr. permits, us, Varghese, we'll come back to Mr. Naresh. Dr. Kumar. Varghese, are you able to hear us? May I introduce the Dr. second Dr. speaker, Varghese, that is Rudra Pratap Singh Rana. Cannot hear us. He Cannot is hear us. a very accomplished उनको जरा teacher. रिंग लगाइए। He's an assistant teacher खुद डिस्कनेक्ट हुए government पड़े हैं primary सर। school of in नंबर है उनका? लगाइए। Korea. Korea. He has received Innovative Teacher Award in 2017 from the Collector of Korea, and Excellent Teacher Award in 2017. And also, what you find is that he has रुद्र प्रताप जी, आप थोड़ा सा वेट करें। एक्चुअली डॉक्टर वर्गीज का कनेक्शन में प्रॉब्लम है, वो सुन नहीं पा रहे हैं नरेश जी को। नरेश जी, आप अपना प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करिए और अगले 5 से 7 मिनट में खत्म करिए। जी। ओके सर, थैंक यू। समझने के बाद प्रश्नों को हल करना बहुत ही रोचक और आसान होता है, और इससे ये भी पता चलता है कि दैनिक जीवन में गणित विज्ञान कब, कहां और कैसे प्रयोग होता है। गणित विज्ञान प्रयोगशाला में एक बच्चा 1 या 2 ही शिक्षण सामग्री बना सकता है, तो सारे विद्यालय के बच्चों को उसका लाभ मिले, इसके लिए वर्ष में एक बार आसपास के विद्यालयों और अभिभावकों को बुलाकर विज्ञान व गणित मेले का आयोजन करना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप देख रहे हैं इस मैथ साइंस फेयर में लगभग 15 स्कूल्स के 750 बच्चे भाग ले रहे हैं। सब एंगेज हैं और एंजॉय के साथ सीख भी रहे हैं, और जब आप स्वयं कुछ करके सीखते हैं तो ज्यादा एंजॉय करते हैं। आप देख रहे हैं मैथ साइंस के TLM को नॉर्थ जोन बेस्ट प्रैक्टिसेस में दिखाते गवर्नमेंट स्कूल के नन्हे बच्चे, जिन्हें देखकर तत्कालीन MHRD मिनिस्टर भी एंजॉय के साथ मैथ और साइंस को सीखते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कितनी भीड़ है और बच्चे कितने उत्साह के साथ बच्चों से ही मैथ और साइंस को सीख रहे हैं। ये नॉर्थ जोन प्रैक्टिस में बच्चे अपनी प्रेजेंटेशन को दिखाते हैं। हमारा अगला कदम गणित व विज्ञान शिक्षण को I told Anupam, you continue with that. Okay, fine. हमारा अगला कदम गणित व विज्ञान शिक्षण को तकनीक के साथ करना। आप जानते ही हैं कि वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी हमारा अभिन्न अंग बनती जा रही है और शिक्षा के लिए तो बहुत ही जरूरी है। इसलिए पाठशाला प्रबंधन समिति व शिक्षकों के सहयोग से पाठशाला में अपने खर्च पर 3 कंप्यूटर, प्रिंटर व इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई। कंप्यूटर से लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जैसे जियोजेब्रा, साइंस सिमुलेशन से मैथ साइंस के वर्चुअल कंसेप्ट को अनुभव किया जाने लगा। गणित विज्ञान पत्रिका बच्चों द्वारा अर्जित ज्ञान को संरक्षित करने व आगे और बच्चों में फैलाने के लिए बच्चों द्वारा ही हर वर्ष एक मैथ साइंस मैगजीन का प्रकाशन शुरू किया गया, जिसका टाइपिंग से लेकर एडिटिंग और
प्रिंटिंग तक का सारा काम बच्चों द्वारा ही किया जाता है। आप देख सकते हैं मैथ और साइंस मैगजीन। अब तक की एंगेजिंग और इंजॉयबल लर्निंग प्रयासों का परिणाम ऐसा रहा कि बोर्ड की 10th क्लास में मैथ साइंस के बच्चों का परिणाम 100% रहा, जबकि कुछ बच्चे दूसरे सब्जेक्ट्स में पिछड़ भी गए। नॉन बोर्ड क्लासेस में रिजल्ट मैथ और साइंस में ए ग्रेड में 77% और बी ग्रेड में 20% रहा। क्योंकि होलिस्टिक डेवलपमेंट हुई तो बच्चे मैथ ओलंपियाड, साइंस एक्टिविटी, साइंटिफिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट और इनोवेटिव मॉडल में ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से लेकर नेशनल लेवल तक अपनी बच्चों ने प्रतिभा दिखाई। डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन क्विज सॉफ्टवेयर। कोविड के इस बुरे दौर में जब सारी दुनिया थम सी गई, तब भी शिक्षा लगातार चलती रही। इसलिए कोरोना काल में मैथ साइंस के एक ऐसे सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया जिसमें शिक्षक और छात्र अपने प्रश्न और उत्तर एंटर कर देते हैं और बाद में बड़े ही रोचक तरीके से क्विज या बच्चों का रिवीजन करवाया जाता है। इसे बच्चे घर बैठकर ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये म्यूजिक, ऑटो स्कोरिंग, पिक्चर्स, लेटेस्ट नॉलेज और बजर राउंड की फैसिलिटी के साथ उपलब्ध है। तो शिक्षण अधिगम में ये बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता है। कोरोना काल के विकट समय में ये तो हमारे लिए वरदान साबित हुआ। इसकी सहायता से स्कूल लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल की चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया। स्कूल ऑन यूट्यूब चैनल। पाठशाला के बच्चों द्वारा लर्निंग एक्टिविटीज को प्रेरणा स्वरूप दूसरे बच्चों को दिखाने के लिए स्माइल ऑलवेज नाम के गणित विज्ञान यूट्यूब चैनल की स्थापना की गई, जो कि वर्ष 2014 से ही चल रहा है। बच्चों की सहायता से कोरोना काल में 6 to 8 साइंस एनसीईआरटी का फुल सिलेबस विद एक्टिविटी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। नेक्स्ट। और हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल शिक्षा विभाग हर घर पाठशाला के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन देने में इस यूट्यूब चैनल का प्रयोग कर रही है। हर घर पाठशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें प्रदेश के चुनिंदा अध्यापक दिन रात वीडियोस, वर्कशीट्स और क्विज़ेस का निर्माण कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हर घर पाठशाला की टेक टीम के अथक प्रयासों से बच्चों द्वारा भेजे जा रहे कंटेंट की सभी क्लासेस की कंटेंट की एक रिपोजिटरी बनाई गई है, जिसे हम ई बुक कहते हैं। और इस ई बुक में बच्चा कभी भी अपने कंटेंट को, अपनी वर्कशीट को, अपनी क्विज को कभी भी घर से देख सकता है। नेक्स्ट, एक्सपोजर विजिट टू आईआईटी, साइंस सिटी एंड पार्क्स। स्वयं से प्रोत्साहित होने के लिए छात्रों को कुछ शिक्षण संस्थानों जैसे आईआईटी, साइंस सिटी या साइंस पार्क्स का भ्रमण करवाना। और खास बात यह है कि पेरेंट्स भी अपने खर्चे पर साथ गए ताकि पेरेंट्स भी मोटिवेट हो सकें। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश एक स्नो बाउंड एरिया है और जब यहाँ बर्फ गिरती है तो लाइट चली जाती है, जिससे बच्चों को स्टडी करने और होमवर्क करने में समस्या आती है। तो मोटिवेशनल टूर के बाद बच्चों ने अपने लिए एक सोलर लैंप और सोलर मोटर पंप का निर्माण किया। इसकी वजह से ये पूरा दिन चार्ज होता रहता है और शाम को बच्चे आसानी से अपना होमवर्क कर सकते हैं और तो और अपना फोन भी चार्ज कर सकते हैं। ये मैथ साइंस का डेली लाइफ में एप्लीकेशन लेवल है। नेक्स्ट, आइए थोड़ी बात करते हैं आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का। असाइनमेंट का मतलब बच्चों को प्रश्नों के उत्तर लिखने या कहीं से चित्र चिपकाने या नकल मारकर लिखने का काम देना नहीं होता है। इसके लिए बच्चे द्वारा वर्ष सीखे गए मैथ और साइंस का प्रयोग करते हुए अपने डेली लाइफ से कोई टॉपिक चुनकर उसके ऊपर चर्चा करके, प्रयोग करके, प्रश्न पूछ करके कोई प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स बनाना है। आप चित्र में देख सकते हैं कि बच्चों ने स्कूल का सुंदर मैप बनाया है या ड्रेन सिस्टम स्कूल का उसका सुंदर मैप बनाया हुआ है। ये बच्चों का प्रैक्टिकल असाइनमेंट है। नेक्स्ट, लंबाई, चौड़ाई, पेरीमीटर, एरिया का उपयोग पाठशाला की छत पर आप देख सकते हैं, जहां बच्चों ने वेलकम लिखा है। सूर्योदय का समय नोट कर और सूर्यास्त का समय नोट कर बच्चे स्वयं ये जान रहे हैं कि दिन लंबा हो रहा है या छोटा हो रहा है। आप चित्र में छोटी सी, जी सर, 2 मिनट में खत्म करिएगा। जी सर, आप चित्र में एक छोटी सी बच्ची को देख रहे हैं जो समाज में मिथ रूपी का काम कर रही है। हमारी पाठशाला के आसपास हमने सुना कि कुछ लोग भूत प्रेत भगाने व बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। तो उस बच्ची ने भी क्या किया, एक गोबर लिया और उसके ऊपर कुछ लकड़ियां लगाई और उन्हें जला दिया और पानी से भरे एक टब में रख दिया,
जिसके ऊपर एक खाली उल्टा घड़ा रख दिया। साइंस के अकॉर्डिंग घड़े के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो जलने में प्रयोग हो गई और उसका स्थान लेने के लिए गड़गड़ करती आवाज में पानी नीचे से ऊपर आता है और लोगों को लगता है कि बुरी आत्मा भाग गई और उनका इलाज हो गया। जब बच्ची ने समाज को ये दिखाया तो सारे लोग जागरूक हो गए कि ये तो साइंस है। इसके नेक्स्ट हमने पेपर फोल्डिंग के आर्ट से मैथ और साइंस को और भी मजेदार कर दिया, क्योंकि जब आप खेल खेल में सीखते हैं तो मैथ सीखना और भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट, शिक्षाविदों, मूल्य पढ़ाए नहीं जा सकते हैं, ये स्वयं सीखे व सिखाए जा सकते हैं। अपने सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं, रहन सहन व वेशभूषा को आत्मसात करने के लिए हमने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के स्थान पर पारंपरिक वेशभूषा आयोजन का कार्यक्रम रखा, जिससे बच्चों को अपनी पहाड़ी संस्कृति के प्रति लगाव हो और वो उसके जुड़े। इसका परिणाम हमारे लिए बहुत ही उत्साहजनक रहा। नेक्स्ट, चित्रकला, रंगोली, मेहंदी व अन्य कलाओं को व्यवहारिक रूप में सीखने व सिखाने में प्रयोग करने के लिए, शिक्षण को रोचक व आनंददायक बनाने के लिए हमने प्रयोग किया। ये स्किल डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। नेक्स्ट, वैल्यू एजुकेशन के लिए हमने पाठशाला में बच्चे अपना स्वयं स्वयं कर सकें कि उन्होंने कितना सीखा। इसके लिए पाठशाला के हर बच्चे का हर वर्ष प्रोफाइल व पोर्टफोलियो बनाना, जिसमें बच्चे द्वारा वर्ष भर द्वारा किए हुए कार्य जैसे यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट, कोई एग्जाम, पेंटिंग, सुलेख, इन सब को रखा जाता है, जिसे पेरेंट्स या बच्चे कभी भी देखकर ये जान सकते हैं कि उनका डेवलपमेंट कितनी हुई। बच्चों में स्वस्थ प्रतियोगिता पैदा करने के लिए स्टूडेंट ऑफ मंथ अवार्ड, जिसमें वर्ष महीने भर में जो बच्चा कार्य करता है, सफाई, स्वच्छता, अटेंडेंस, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, उन सब के आधार पर बच्चे को बेस्ट स्टूडेंट का इनाम दिया जाता है। ईमानदारी विकसित करने के लिए हमने स्कूल में लॉस्ट एंड फाउंड कॉर्नर रखा, जिसमें अगर पाठशाला में बच्चे को कोई पेन, पैसे, किताब, कॉपी या कुछ भी कहीं पड़ा हुआ मिल जाए तो बच्चा अपने पास रखने की बजाय वो लॉस्ट एंड फाउंड कॉर्नर में जमा करवा देता है और जिसकी खोई हुई वस्तु है उसे वो मिल जाती है। सफाई के लिए भी टीचर आगे आए तो बच्चे अपने आप ही उसको सीख लेते हैं। और लास्ट स्टेप हमने किया कैंपेन इन डिफरेंट स्कूल्स। प्राप्त हुए शानदार परिणामों से अन्य विद्यालय भी लाभान्वित हों, इसके लिए हमने मोटिवेशनल कैंपेन आयोजित किए गए। स्कूल स्कूल जाकर हमने सभी लोगों को ये मोटिवेट किया कि आप भी इस तरह के स्टेप्स स्कूल में ऑर्गेनाइज करें। तो हिमाचल के जो दूर दराज चंबा भरमौर क्षेत्र है वहां भी इस तरह के कैंप्स का आयोजन किया गया। कोरोना काल में शिक्षकों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण का सहयोग दिलवाया गया। इस इंजॉयबल और एंगेजिंग पेडागोजी से नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल और एप्लीकेशन, इन सब का पूर्ण विकास होता है। इन द एंड में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमारी जो वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली है वो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को तो एग्जाम बेस्ड तरीके से बड़े अच्छे से जांचती है, परंतु स्किल और एप्लीकेशन को उतने अच्छे तरीके से नहीं जांचती है। जिस तरह से साइंस में प्रैक्टिकल होता है उस तरह से हमारी ये विचार है, ये मांग है कि मैथ में भी प्रैक्टिकल होना चाहिए, लैंग्वेजेस की भी एक अपनी लैब होनी चाहिए और उनका भी मूल्यांकन करते वक्त प्रैक्टिकल होना चाहिए। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूंगा कि मान लो कोई छात्र मैथ पढ़ने के बाद 100 में से 100 अंक लेता है, लेकिन अगर अपने छत के लिए कितनी बोरी सीमेंट लगेगा, कितना रेत लगेगा, कितना बजरी लगेगा, ये कैलकुलेट ना कर पाए तो उस बच्चे ने मैथ सब्जेक्ट तो अच्छे से पास कर लिया, लेकिन मैथ का जो कंटेंट है, जो मैथ है असली मैथ, वो बच्चा नहीं सीख पाया। हर घर पाठशाला में जो संस्कृत के हमारे SRG हैं वो संस्कृत श्लोक, गायन, भाषण व चर्चा परिचर्चा ऑनलाइन करवा रहे हैं। और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्राबिल सिरमौर के बच्चों की संस्कृत वार्ता को अगर आप सोशल मीडिया पर सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो इन बच्चों के प्रयासों को वार्षिक मूल्यांकन में स्थान अवश्य मिलना चाहिए। ये प्रैक्टिकल होना चाहिए, तो हर जब सब्जेक्ट का एक प्रैक्टिकल इवेल्युएशन हो तो हमारी लर्निंग कंप्लीट हो। हमें लर्निंग को थ्योरेटिकल एजुकेशन की अपेक्षा प्रैक्टिकल एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। मुझे समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश ठाकुर, हिमाचल। जय हिंद सर। Naresh Kumar ji, thank you very much for elaborating the exercise that you have done. It's really innovation. You have brought out really innovation by universalizing not only maths education but also science lab, and the way that you have introduced is an example to be emulated by others or other teachers, not only in Himachal but also perhaps in other parts of the country. So this certainly your presentation will have a good effect
a positive impact on others who are listening to you and also seeing the presentation. And also it is recorded and it is available for others to see at any point of time. Friends, let us move to the next person. The only request I'll make is that please try to stick to 15 minutes. Otherwise, we will not have time for discussions. I have already introduced Mr. Rudra Pratap Singh Rana, and he has received innovation awards from the collector and also innovation awards from the block CEO. So, sir, I will not take much time to introduce you. You can make use of your time for the presentation. You have transparencies, PowerPoints? Yes. PowerPoint है, अच्छा ठीक है, कर लीजिए. Okay. Thank you so much, sir. शिक्षक पर्व के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सम्मिलित समस्त आदरणीय जनों को मेरा सादर प्रणाम और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उन्नत बनाने की दिशा में, रोचक बनाने की दिशा में हमने जो नवाचार किए हैं वो आप सबके साथ साझा करने जा रहा हूं. सबसे पहले बात करेंगे कोविड पीरियड की. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. कोरोना संक्रमण के दौरान जब बंद विद्यालयों में पढ़ना पढ़ाना एक समस्या थी, उससे हमें छतरी में एक मोटरसाइकिल में एक छतरी लगा के उसमें कुछ TLM शब्दचित्र कार्ड जिसको बच्चे दूर से देख सके, एक व्हाइट बोर्ड, कुछ एक ब्रीफकेस में कुछ कहानी की किताबें, ये सब लेके अलग अलग मोहल्लों में जाके लगभग 60 से 70 बच्चों के साथ लगातार 1 से 1.5 वर्षों तक इस प्रक्रिया को जारी रखा. और सबसे अच्छी बात थी कि इसमें संक्रमण का एकदम खतरा नहीं था. बच्चे भी एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते थे और ना ही टीचर उनके संपर्क में आता था. और इससे फायदा ये हुआ कि बच्चों की जो गुणवत्ता थी, शैक्षिक गुणवत्ता थी, वो बरकरार रही और बच्चों को हमने नियमित रूप से किताबों से जोड़े रखा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एक वीडियो के माध्यम से अपने कार्य को दिखाना चाहेंगे. वीडियो प्लीज. इसके पहले वीडियो है सर. वीडियो प्रीवियस स्लाइड प्ले करिए. देख रही ना कैमरा से. मैं इस कैमरा से सर आपको इस वीडियो को दिखाना चाहूंगा. इस तरह से मोटरसाइकिल जाते थे, बच्चे प्रेयर करते थे, उसके बाद अपनी चीजों को वहां पढ़ते थे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. उसके बाद कहते हैं ना कि स्वस्थ मस्तिष्क जो है स्वस्थ शरीर पे निवास करता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना विद्यालय को खूबसूरत, आकर्षक और संसाधन युक्त बनाया जाए. तो किस तरह से. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये विद्यालय का प्रारंभिक स्वरूप. नेक्स्ट करते जाएंगे. और जब शाला प्रबंध समिति के लोग जुड़े, पालक लोग जुड़े, तो सारे संसाधन अपने विद्यालय में हमने उपलब्ध कराया, जिससे बच्चे स्कूल की तरफ भागते चले आए, लोगों का एक जुड़ाव हो विद्यालय से. नेक्स्ट करते जाएंगे सर प्लीज. 3-4 स्लाइड आगे बढ़ा देंगे. सामुदायिक सहभागिता से कैसे विद्यालय का स्वरूप बनाया, चेंज किया जा सकता है और रोचक तरीके से बच्चे वहां सीखें, ऐसा सब चाहते हैं और वो हमारी मदद भी करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट करते जाएंगे प्लीज. उसके बाद ICT का उपयोग. आज एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो पूरे वैश्विक आवश्यकता है और इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए हमने जन सहयोग से एक लैपटॉप और प्रोजेक्टर की व्यवस्था करके रखी है. और बच्चे, आज हम कभी डरते थे लैपटॉप छूने से, आज हमारे बच्चे बड़े सहज तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं और अपनी पसंद की चीजों को, विषय वस्तु की चीजों को लैपटॉप से खोज के और प्रोजेक्टर में प्ले करके और बड़े आनंद रूप से और सीख रहे होते हैं. नेक्स्ट स्लाइड करते जाएंगे प्लीज. ये लैपटॉप और प्रोजेक्टर जो इस विद्यालय में उपलब्ध है. नेक्स्ट स्लाइड. ई-रिक्शा का शैक्षणिक उपयोग. हमारे बच्चों की काबिलियत को देख के, उनके अभिव्यक्ति कौशल को देख के और जन सहयोग से एक ई-रिक्शा मिला उपहार में
और उस ई रिक्शा का उपयोग किस तरह से करते हैं। हमारे बच्चे जो है 4-4 किलोमीटर से दूर से आते हैं, तो उन बच्चों को घर से ही सीखना आरंभ हो जाता है। जैसे ई रिक्शा में बैठो, उसमें एक म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, तो पाठ की सारी कविताओं को हमने रिकॉर्ड करके उसमें रखा है, और उन कविताओं को बच्चे गाते हुए उस रिक्शा में बैठ के आते हैं। तो क्लास 1-2 के बच्चे भी क्लास 4-5 की कविताओं को जानने लगते हैं, क्लास 5 के बच्चे भी बाकी कविताओं को सीख लेते हैं। तो बड़े रोचक तरीके से इस ई रिक्शा का उपयोग करते हैं। साथ में शासन की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, सूखा राशन वितरण हो एमडीएम के तहत, या बच्चों को यूनिफॉर्म पहुंचाना उनके घर तक, इस तरह से ये सारा काम इस ई रिक्शा के माध्यम से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बागवानी का सहायक शिक्षण, अच्छा, एक झलक विद्यालय में वाद्य यंत्र हमने रखा है, और संगीत लगभग सबको प्यारा लगता है, और संगीत से एक अलग ही माहौल क्रिएट होता है। तो हमने प्रेयर में या कविताओं को जब सिखाना हो, उस वक्त हम वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, और ये बच्चे खुद से वाद्य यंत्र प्ले करते हैं और गाते हैं। साउंड ये छोटे छोटे बच्चे जो हम कल्पना नहीं किए थे कभी के वाद्य यंत्र को प्ले कर लेंगे, और ये खुद से वाद्य यंत्र बजा के और संगीत भी सीख रहे हैं, सुर सीख रहे हैं, ताल सीख रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय गीत की एक झलक। इस तरह किताब की कविताओं को भी हमने एक धुन देके और क्लासरूम में वाद्य यंत्र के साथ बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे बड़े मजे से सीखते हैं इन चीजों को। स्लाइड प्लीज सर। उसके बाद मैं लेके चलूंगा, ये है मझेनी बेंगरा कहते हैं सर छत्तीसगढ़ी में, कोरिया की भाषा में, या डाइनिंग टेबल। स्टॉप शेयरिंग प्लीज। बच्चे यहाँ जब बैठकर खाते हैं तो इतना आनंदित होते हैं और कहते हैं कि टीवी में ऐसे हीरो लोग खाते हैं बैठ के, और ये बच्चे एक खाने का सलीका सीखते हैं। ये भी लर्निंग से हमने इसको जोड़ा है। कितने प्रसन्न नजर आ रहे हैं ये बच्चे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक गार्डन हमने बनाया सर, वहां पे लगभग 50 किस्म के 300 पौधे लगे हुए हैं, और उन सारे पौधों में, नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट करेंगे सर, प्रीवियस करेंगे सर प्लीज, प्रीवियस आगे बढ़ गए हैं। तो वो सारे पौधों में उनके इंग्लिश और हिंदी के नाम लगे हुए हैं। बच्चे आसानी से उन पौधों को, ये एक वीडियो में दिखाना चाहूंगा। इन पौधों में इनके नाम लिखे हुए हैं, तो बच्चे इन पेड़ पौधों से परिचित भी हो रहे हैं और इनके अंग्रेजी और हिंदी नाम को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उनके पठन कौशल में वृद्धि हो रही है, साथ ही अभिव्यक्ति कौशल विकास कहें या लैंग्वेज डेवलपमेंट कहें, ये सारी चीजें उन बच्चों का विकास हो रहा है, और उनके शब्द भंडार में वृद्धि हो रही है। इस तरह से जैसे साइकस, फर्केरिया, इफोर्बिया मिली, जो हम शिक्षक नहीं जानते थे, आज हमारे बच्चे बड़ी आसानी से इन पौधों के नाम बता रहे हैं और इनके गुण जान रहे हैं कि इन पौधों का उपयोग क्या है। और नेक्स्ट करेंगे सर। यहाँ लूडो और सांप सीढ़ी भी बना हुआ है स्क्वायर में। बच्चों में अंकों की, वर्णों की, संख्याओं की अवधारणा विकसित करने के लिए हमने इसे बनाया है। जनरली लोग शिकायत करते हैं कि प्राइमरी के बच्चे मिडिल में आते हैं तो उनसे कुछ आता ही नहीं, तो इस लूडो में वो समझ ही नहीं पाते कि वो खेल रहे हैं या सीख रहे हैं। इतनी आसानी से अंकों को, वर्णों को, उनकी अवधारणा को समझ लेते हैं बच्चे, उनको रटना नहीं पड़ता। तो ये सब गतिविधि रटन प्रणाली से मुक्ति की ओर हमको लेके जा रही है। नेक्स्ट करेंगे सर। उसके बाद किचन गार्डन की ओर लेके चलूंगा आपको। नेक्स्ट प्लीज। अभी जो सर नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी यह कहती है कि बच्चों को 3H आधारित शिक्षा दी जाए, अर्थात सीखना हेड एंड हार्ट से हो। तो हमने इसके लिए सामने ज्यामितीय आकृतियों में क्यारियां बनाए हैं बच्चे, और इस पे सब्जी उगाते हैं। और छोटे बच्चे इनके हिंदी इंग्लिश नाम को रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल ये सीखते हैं। क्लास 3rd से 4th 5th के बच्चे भुजाएं क्या है, लंबाई क्या है, कोण क्या है, एरिया क्या है, पेरीमीटर क्या है, ये सारी चीजें बच्चे, नेक्स्ट प्लीज, इस कौशल आधारित शिक्षा से सीख रहे हैं।
और ये प्रयोग घर पे करते हैं। जब वो फावड़ा लेके शाम को जाते हैं तो पालक उनके पूछते हैं, अरे दाऊ का करता सिर्फ फावड़ा लेके? वो बोलता है, गुरुजी पढ़े बर कहीं से। तो परेशान रहता है कि फावड़ा लेके क्या पढ़ेगा हमारा बच्चा। और तब वो देखता है पालक की मदद से फिर वो आकृतियों पे साग सब्जी उगाते हैं और फिर बताते हैं कि पापा ये त्रिभुज है, चतुर्भुज है, इसका परिमाप ऐसे निकाल के इसका परिमाप ऐसे निकाल कर बताते हैं। साथ में जो इंग्लिश के सेंटेंसेस वर्ड जो सीखे होते हैं बच्चे, या मैथ्स में औसत सीखे हैं, लाभ हानि सीखे हैं, तो ऐसे जिनके पापा व्यवसायी हैं वो अपने घर में हिसाब किताब करते हैं। बच्चे जाके, पापा आज 15 के भाव में 10 किलो टमाटर बेचे तो 150 का हुआ होगा, कल आपने 200 का बेचा, इतने दिन में आपको कितने लाभ हुए, कितनी हानि हुई, औसतन आप कितनी सब्जी बेचते हैं। तो मैथ्स की चीजों को इस तरह से घर में यूज करते हैं। साथ ही इंग्लिश के अगर वर्ड सीखे, जैसे वो घर में मच्छर नहीं बोलेगा, दाइगे लीजर लागे, दाइगे मस्कीटो लागे, इस तरह से छोटे छोटे इंग्लिश वर्ड का उपयोग घरों पे करते हैं। और ये देख रहे हैं आप इस फोटो में कि बच्चे पौष्टिक भोजन भी खा रहे हैं और इन आकृतियों की पहचान, इसका परिमाण क्षेत्र निकालना सीख रहे हैं। एक वीडियो के माध्यम से मैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आप तक प्रेषित करूंगा, लंबा वीडियो हो। उसके बाद ये कौशल आधारित शिक्षा, कहते हैं ना, शिक्षा सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि हाथों से भी हो। तो घर में जो छोटी छोटी समस्याएं आती है, इन समस्याओं को हम एक इलेक्ट्रिक स्विच, take another 2 minutes and wind up. ओके सर, थैंक यू सर, ओके सर। तो कौशल आधारित से जैसे हम एक स्विच बदलना है तो मिस्त्री का इंतजार करते हैं, तो हमारे बच्चे पंखों के असेंबल करते हैं, वाटर फिल्टर हो गया, साइकिल की रिपेयरिंग हो गई, ऐसे हैंड पंप की रिपेयरिंग जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते। ये हमारे सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इन चीजों को बड़े अच्छे से कर ले रहे हैं और इस पे निर्भरता, दूसरों पर निर्भरता कम होगी और निश्चित है ये कौशल आधारित शिक्षा इन बच्चों को मिलेगी। बाउंड्री वाल का उपयोग भी हमारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन हम लोग विद्यालय प्रांगण में करते हैं सर, होली हो, दीपावली हो, तो राष्ट्रीय एकता की भावना प्लस सामाजिक समरसता की भावना जागृत होती है। और जो निबंध लेखन हम रटते थे कि होली में, दीपावली में मिठाई खाते हैं, दीपक जलाते हैं, आज हमारे बच्चों को रटना नहीं पड़ता बल्कि अनुभव आधारित शिक्षा बच्चे हमारे सीखते हैं। ये इस तरह से दीपावली मनाई जाती है होली के। और साथ में स्थानीय खेलों में, जैसे कबड्डी का खेल है, बच्चे जब कबड्डी खेलते हैं तो सामने वाली टीम का एक बच्चा एक क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो सामने का बच्चा फिर वो कबड्डी ना बोल के न्यू दिल्ली, इस तरह इन खेलों में कित खेल है, लंगड़ी है, बिल्लस है, इन सारे खेलों में बच्चे इस तरह लैंग्वेज सीख रहे होते हैं। ये कबड्डी ना बोल के न्यू दिल्ली इस तरह की चीजें करते हैं सबसे लंबा। और ये यहाँ की संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास किया हमने, छत्तीसगढ़ संस्कृति को, कि बच्चे सीखें। अभिनय और रैलियों के माध्यम से भी बच्चों ने काफी सामाजिक जागरूकता लाई है। कुछ समय पहले एक कंडक्टर अभी बस में यात्रा के दौरान कहते हैं कि सर, इसके पहले ना यहाँ महिलाएं भी अगर बस में चढ़ती थी तो नशा करके चढ़ती थी, और आज के डेट पे पुरुष भी रास्ते पे नशा करता हुआ नहीं मिलता। ये उपलब्धि थी हमारी। साथ में जो विवाह संस्कार होते हैं उसमें हर विवाह में एक मंडप में कम से कम 20 से 25 पौधे या पेड़ या उनकी टहनियां काटी जाती है। तो स्कूल की ओर से हमने टेंट सेट उपलब्ध कराया है लोगों को। बच्चों से जाके समझाते हैं कि भाई आप हरे पौधे नहीं काटो, यही प्राणवायु देती है, इससे पर्यावरण संतुलित रहता है। और आज पिछले 2.5 साल में 12 शादियां हो गई, किसी ने एक पेड़ नहीं काटे, सबने मंडप यूज किया। तो ये बच्चों की उपलब्धि थी। और आज लगभग हमने अपने गांव के 250 से 300 पौधे इस दरमियान बचाए हैं। और हमारे इन कार्यों को देख के समुदाय से लगभग 4 से 5 लाख रुपए का अनुदान कहे, पुरस्कार कहे, वो बच्चों को मिला है। साथ में इन बच्चों के अभिव्यक्ति कौशल में एक गजब का विकास हुआ है। इसका परिणाम ये हुआ। और राज्य के मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी हमारी इन गतिविधियों से काफी प्रभावित है। थैंक यू सो मच सर। Thank you very much. This was a different type of innovation and experiment, whereby it is not, students are not sitting in the classroom alone. They're taken out, and in the process, classroom itself is redefined. The learning process is redefined in terms of what is happening through games, what is happening through the work that they do, what is happening through the social work that they do, or in other words, linking the schooling processes, teaching learning processes with outside world, what is happening in the surrounding, that is a very good example, complementary to the other example of mathematics teaching, etc., that were done by Mr. Kumar. Thank you very much for your presentation. We appreciate it.
And we Thank feel you so very much, bad sir. to stop people, asking you to stop, you are very much excited and the process is also very good. Thank you very much once So again. much, sir. अवसर देने के लिए शुक्रिया सर. Thank you. May I request Mrs. Revati, who is a primary school teacher, the government primary school in Puducherry, or we used to call it Pondicherry, now it is Puducherry. She is a National ICT Awardee, the year 2019, and she has made impact on children by introducing toy-based pedagogy. So this is a different type of innovation that you are going to see. Now it is time for Madam Revati. Yes, sir. Please share my slide, sir. Yes, that's true. Go ahead. A very good morning to one and all. I am K. Revati, working as a primary school teacher in Government Primary School, Pillayarkuppam, Bahur, Puducherry. I would like to share some of the innovative practices for the topic Innovative Pedagogy to promote enjoyable and engaging learning. Next, sir. Each child is different in nature. In my class, most of the children are from rural backgrounds. Their attendance was very poor. The challenges before me was facilitating my children to achieve the learning outcomes. Next, sir. The challenges before me was to make the teaching learning process more enjoyable. So, I have planned to change the textbook teaching methods into appropriate innovative teaching learning techniques to make learning more enjoyable. Next, sir. So, toy-based pedagogy was the medium which I explored to order and to achieve the learning outcomes to make teaching more enjoyable. We used handcrafted animated toys for teaching. We used easily available eco-friendly materials for making toys, and those toys were used for the teaching learning process, and my students were so excited. All the children were so involved in the preparation of the toys for the content. We took some clay nearby our school and asked the children to make some toys which are required for teaching. The children became enthusiastic and that helped them to develop their listening and speaking skills. Next, sir. During this process, the children worked together in groups collaboratively and showcased their creativity. This process helped to develop their fine motor skills and also social cognitive developments. Next, sir. Later on, introduced stick puppets. Children loved to prepare it. Children conducted puppet shows in the classroom. They enacted themselves as the stick puppets. This method of learning made them work in a team and enhance their speaking skills. Next, sir. As days went by, our classroom filled with toy puppets. Next, sir. Handcrafted materials and print-rich classrooms. Next, sir. Puppet theatres. Next, sir. Puppet theatres and planetarium and so on. Next, sir. All the characters from the textbook became a toy. Children narrated the stories using puppets on their imagination. Next, sir. I would like to showcase some of the toys prepared for the lesson. This toy is for the lesson Robinson Crusoe for class 5 English. Next, sir. This setup is created for the lesson Curly Locks and the Three Bears for the lesson Curly Locks for class 2 English. Next, sir. This is Helen Keller toy created for the class 4 students. Next, sir. Children enjoyed it a lot and they play, communicate and travel with these characters that help to make their learning interesting and more enjoyable. Next, sir.
These are the miniature toys prepared for the lesson. Wonderful ways when the characters from the lesson come into reality. Children started to speak, act, and play with these characters. Even they became like those characters. Next, sir. This hunter character is prepared for the chapter Flying Together for class 5 English. Next, sir. This is the craft for Ice Cream Man poem for class 5 English. Next, sir. We also prepare 2D crafts for the lesson, the life cycle of the butterfly. They learn the life cycle of the butterfly very easily. Next, sir. We have created crafts for learning grammar contents like verbs and prepositions. It gave a practical learning experience for the children. Next, sir. We moved one step ahead and created stop motion animated videos by using these toys. We shot the lessons in the appropriate shooting spots like seashore, forest, paddy fields to make the contents more realistic. Next, sir. This is one of the animated video, the grasshopper and the ant for class 2. Here I would like to showcase one of the toys animated video for a few minutes. Next, sir. Please play this video, sir. Okay, thank you, sir. Next slide, sir. During pandemic times, children involved in the curricular and next, sir, curricular and co-curricular activities. Next, sir. Online classes were conducted through WhatsApp and children submitted their assignment in the WhatsApp group. I would like to share some of the achievements of my children. Next, sir. They participated in regional and state level project presentations and painting competition for energy conservation. Next, sir. I strongly believe that the innovative teaching methods build more confidence among the children. Next, sir. And children showcase their talents in all the events. Next, sir. And they won lots of appreciation by the community members. Next, sir. We also conducted the reading festivals after every term to exhibit their language skills. Teachers and headmasters from other schools, parents, public appreciated our students for their language skills. Next, sir. Here I would like to showcase the ICT activities followed by the children. Children participated in the creation of the e-contents. They are able to make chapter 3D toys. They are able to make a video in the stop motion animation, and they are able to scan QR codes for the chapters, and they are able to record and give voiceover for the e-contents, and they are able to edit a video in the KindMaster apps, and they are using smart boards with regular timetables. They learn camera focus and angles to capture image of a bird, animals and natural scenes. They are using some of the educational apps for learning games, spelling, puzzles and GK. Next, sir. And I would like to share my future plan. My future plan is to make my teaching learning process as a skill-based learning and to convert the crafted toys prepared using eco-friendly materials into a standardized format resources like video lesson that could be useful for other schools, students and teachers. I am so delightful. Next, sir. Next, sir. I'm so delightful
to share the learning outcomes from toy-based pedagogies. Children may vary in the marks and ranking, but not in their understanding level. More than 90% of children are equal in their understanding, and it helped me to nurture their creativity and imagination, and they got lots of appreciation by the community members, and they are learning by doing, since their listening and speaking skills are increased, and they are engaged and enjoyed, and their learning is permanent. Next, sir. I wish my classroom of tomorrow will nurture critical thinking, creativity, and ensures a joyful learning experience for my children. Thank you very much. Next, sir. Thank you very much for this wonderful opportunity to share my experiences on toy-based pedagogy. Sincere thanks to everyone, sir. Thank you, Madam Revati. Thank you very much for maintaining the time and presenting it with a level of clarity, and also a new way of teaching. I was quite interested with the different activities that you have engaged the children with. And also, what is important is that all these leads to improved student learning. That is what you try to conclude. That is very important, because we can introduce many of the pedagogical practices or many innovations in the classroom or outside the classroom. Ultimately, if these practices do not lead to improved understanding and enhanced learning outcomes, then perhaps their value should be treated as less. And that is not the case in all the three presentations. I am very happy that in all the three presentations, it has come out very well that not only that they have totally changed the classroom practices, they changed the teaching learning processes, and also that has increased the learning opportunities and the learning outcomes. So thank you very much for that. Joshi Saab, would you like to make any comment at this stage before we ask some questions to the speakers? Okay, sir, all were presented very well, has covered all aspects of innovative practices. Thank you all. Okay. One question that I have to all the three presenters, three speakers, is that I'm not counting Dr. Emmanuel on this question, because he is not actually teaching in the schools. Teachers complain that these innovations are very important and very good, but they do not have time. We keep the time schedule as the old one, the traditional one, and we try to introduce many new ways of teaching and learning. Firstly, it is introduced first time. Secondly, this takes little longer time. It cannot be confined or it cannot be constricted by the traditional division of an hour or a period into 50 minutes or 45 minutes, etc. So can you respond to this? How did you overcome this difficulty? या सर, जी बिल्कुल। मेरा ये मानना है सर कि अगर टीचर सिर्फ अपने टाइम को देखें, अपने स्पेकुलेटेड क्लास टाइम को देखे, तो नेचुरली है कि उसे लगेगा कि थोड़ा समय है। लेकिन अगर ये सारा काम बच्चों में बांट दिया जाए, अगर क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और हर बच्चे के टाइम को यूज किया जाए, तो हमारे पास ढेर सारा टाइम हो जाता है। अगर टीचर स्वयं टीएलएम बनाने की बजाय बच्चों की हेल्प ले, तो जो टाइम की प्रॉब्लम है बड़ी इजीली क्या हो जाती है, ओवरकम हो जाती है। तो हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कहीं किसी मटेरियल को, किसी कंटेंट को, किसी टीएलएम को या किसी एक्टिविटी को करने में समय की समस्या है। मतलब ओवरऑल पार्टिसिपेशन सभी की होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। राणा जी, आपका राय क्या है? We cannot hear you. यस सर, मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है। सर हाँ, हमने कुछ नया नहीं किया, बल्कि किताबों से बच्चों को लेके और फील्ड पे ले आया। एक्चुअल में जो कौशल आधारित शिक्षा या कक्षा बाहर शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो बच्चे जनरली किताबों से उठते हैं उसी चीज को बार बार पढ़ के, और उस किताब को अगर अलग रूप में हम वहाँ प्रस्तुत कर दे बच्चों के सामने, तो बड़े उनके लिए मजेदार चीज होनी चाहिए, बस कुछ रोचक चीजें होनी चाहिए। इसके लिए ना तो कहीं पे ज्यादा खर्चे की आवश्यकता है, ना कुछ नया करना है। हाँ, बच्चों को खुद से जोड़े कैसे, और वो बच्चा चाहता क्या है, अगर इसको ध्यान में रखें तो इजीली कर सकते हैं। थैंक यू। मैडम रेवती, can you hear me? Yes sir, I can hear you, sir. Okay, please go ahead. I was asking
about Awesome. a question to all of you, that whether the teachers feel that the time that they have is sufficient enough to experiment with these new innovations that they have introduced. Yes, sir. Because I'm changing the chapter itself as my innovation. So I think my classroom and regular timetable is enough for me to change. Just I change the methods, sir. From apart from textbook to craft. That is toy based. All So right. it is possible for me to overcome these issues, sir. Okay, all right, that's fine. See, another issue is that, when we change the pedagogy, and if the student assessment remains the same, Yes, yes, sir. how this will fit into new pedagogies, that you are introduced, because you Yes, have sir. introduced very innovative pedagogies, which Yes, yes. deepens the understanding. But if the examination system or if the assessment system remains the same, how it is going to affect the children? Actually, for Children will be primary, able to, yes, yes, will the yes, children sir. will be able to combine these two old assessment patterns and new teaching patterns? Yes, sir. Sure, sir. Yes. Actually, they are learning all the vocabularies in each and every activity, sir. We are teaching the vocabularies also in toy-based. Like, for example, for reading, we are giving one vocabulary. So they are enjoying the learning and doing. So it is possible for them to overcome LSRW skills also, sir. Okay, thank you very much. Rana ji, बताइए. We cannot hear you. जहां तक मैं समझ पा रहा हूं असेसमेंट की बात हो रही है, तो क्या सर assessment. इसमें पालकों की भागीदारी भी सुनिश्चित करें क्या? हम जो सिखा रहे हैं तो वो हमारा बच्चा घर तक कितनी चीजों को लेके जा रहा है, घर में उनका उपयोग कितना कर रहा है, और पालक भी इस असेसमेंट कर वो भी मार्क्स दे कि मेरा बच्चा अगर इस लेवल में है और इतनी चीजों को सीख रहा है. इस तरह से कुछ करने की शायद आवश्यकता हो. तब सीखे तो बच्चों में दिखनी चाहिए समाज को कि हाँ ये बच्चा कुछ सीख रहा है. ठीक है, थैंक यू. वेलकम सर. थैंक यू. जी सर. नरेश कुमार जी. जी, ये बात मैंने पहले भी कही कि जो हमारी असेसमेंट है वो जो हमारी एक्टिविटी बेस्ड है उसको उसमें इंक्लूड करना चाहिए. जैसे हम साइंस में स्किल को असेस करते हैं, एप्लीकेशन को करते हैं, वैसे ही सभी सब्जेक्ट में करना चाहिए. अगर फिर भी हम ओल्ड इवैल्यूएशन सिस्टम पर ही स्टिक रहते हैं, फिर भी जो हमारी इनोवेटिव पेडागोजीज हैं जो हम यूज कर रहे हैं मैथ और साइंस का, ये डे टू डे लाइफ के साथ साथ हमारे कंटेंट से डायरेक्टली लिंक है. तो बच्चों को, जब बच्चे स्वयं कंटेंट को, कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, तो जो उनका सिलेबस है, जो उनका करिकुलम है, वो साथ साथ आगे बढ़ता है. मेरा बोलने का मतलब है कि ये इस दौरान भी बच्चों की पूरी मदद करता है अगर ये इवेल्युएट नहीं भी होते हैं, क्योंकि जब बच्चा स्कूल से निकलेगा तो ये डेली लाइफ में उसके लिए बहुत क्या होंगे, फायदेमंद होंगे, क्योंकि बच्चे के अंदर स्किल और एप्लीकेशन दोनों चीजें क्या हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, जो कि एंड रिजल्ट है हमारी एजुकेशन का. जी सर. Okay, thank you very much. That's very important dimension that you are bringing up. My issue, another issue that I have is that, if when you look into, we say that, teaching in the schools is more theoretical, it is not practical, it is not related to practical dimensions. But what I find in all the three experiments or innovations that we talked about is that, these two things are brought together in the sense that the practical dimensions and theoretical understanding, these two things are brought together. I think that is a great success. That is something which people are struggling, not only at the primary level or secondary level, even at the higher education level. When people are trying to do that, they find it quite difficult to articulate these type of changes, linking practical dimensions with the theoretical understanding. So, but I find that the innovations that you have produced tries to make students start thinking, and also they start working with their own hands, So that's a good imagination, developing imagination and translation of that imagination into a practical sense, That's so how do you develop these things in children? Naresh Kumar ji? जी सर. मैंने पहले भी कहा कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं हर बच्चा करके दिखाए. मतलब जो थ्योरेटिकल कंटेंट है, थ्योरेटिकल का अर्थ है कि हमने कुछ बच्चों को ये बता दिया कि आप स्वच्छता के ऊपर 50 लाइनें लिखें, तो बच्चा हो सकता है रट्टा मार के या कुछ कहीं से
ये करके लिख सकता है, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकली एक भी काम नहीं करता है तो हमारी एजुकेशन उतनी प्रभावशाली नहीं हुई। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो हर कंटेंट, चाहे वो टीचर का है, टीचर भी एक्टिविटी या डेमो या कुछ करके दिखाए, अपने व्यवहार में उसे उतार कर दिखाए, और बच्चा ऑटोमेटिकली टीचर को फॉलो करता है, लर्न करेगा, और बच्चा भी क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। जो कुछ उसने क्लासरूम में देखा या स्वयं उसने करके किया, मेरा ये मानना है कि हर चीज प्रैक्टिकल ही होनी चाहिए, चाहे लैंग्वेज है, चाहे आपका आर्ट है, या आपका साइंस है, या मैथ है, हर चीज प्रैक्टिकल हो और हर चीज की एक लैब अपनी हो, और उसे मूल्यांकन में, इवेल्युएशन में स्थान जरूर दिया जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राणा जी, सुनाई नहीं पड़ता है, आई मीन वी कैन नॉट हियर यू। ओके सर। बच्चों को कहीं ना कहीं, पहली बात तो सिलेबस में ऐसी चीजों को रखें जो उसके जीवन के उपयोगी हो, जिस क्षेत्र में वो रह रहा है उसकी उपयोगिता क्या है, ऐसे सिलेबस हो हमारे। दूसरी चीज कि बच्चों को ना फील्ड में लेके जाएं। हम मैथ्स में दे दिए क्लास फिफ्थ में, एक खेत है, वो आयताकार भुजा है, उसका लंबाई है, चौड़ाई, कभी वो बच्चा खेत को जोड़े नहीं इस चीजों से। अगर एक बार उस बच्चे को लेकर खेतों पे ये काम करवा दे तो आसानी से, तो कहीं ना कहीं हमको बच्चों को उस चीज को एहसास कराना पड़ेगा, अनुभव करे वो खुद छू के। जो बात हमने की थी कि शिक्षा सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि हाथों से भी, फील्ड पे लेके जाना पड़ेगा सर उसको। ओके, थैंक यू। मैडम रेवती। Yes, sir. Sir, I could not understand. No, sir. No, sir. I could not understand Hindi, sir. How do you link practice and theory when you're talking about the students and the conceptual understanding and the practical orientation that you are giving? Okay, sir. Actually, we are in the primary class, sir. So I'm using videos for the lessons, sir. I'm playing the video in the classroom. So how I'm pronouncing the sentence in the video, they are also repeatedly practicing like that. And so, yes, sir, that will be easy for them to. Because I saw that, you are teaching about Robinson Crusoe and other things, Yes, etc. yes, sir. So how the children will understand Robinson Crusoe, one person staying in an island, how do you communicate this to young children at the primary school? Yes. They are seeing that, sir. They are seeing the island, and they are seeing that Robinson in the island. So automatically, their mind will be capturing, oh, Robinson is in the island. So there is not any no need of any theoretical to teach that concept, sir, because everything is practical in front of them. So they are capturing, they are feeling the learning, sir. Okay, thank you very much. One question that I would like to pose to Dr. Emmanuel. We have seen very clear elaboration of 3 different types of innovations that were made at different levels in the school education. So if you, since you are from the central organization, if we want to try to make these experiments as a basis to change the pedagogical dimension in the school education, how will you go ahead with that? Dr. Emmanuel. Hello? Dr. Emmanuel? I think there is some connection problem. Perhaps we did not get it. Dr. Joshi sir, you wanted to say something? Your hand is up. जी सर। Yes, please go ahead. एक्टिविटीज टीचर बड़े उत्साह से कर लेते हैं, चाहे वो फील्ड विजिट हो या कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिस है, लेकिन ज्यादातर टीचर मैंने देखा है वो एक्टिविटीज को लर्निंग में कन्वर्ट करने में वो जो सबसे बड़ा चांस है वो चूक जाते हैं। उनके लिए हर एक्टिविटीज के बाद जो रिफ्लेक्शन सबसे जरूरी है वो स्कूलों में मिसिंग हो रहा है। ऐसा कभी कभी मैं देख रहा हूँ। एक्टिविटी बढ़िया से कर रहे हैं, बच्चे उत्साह से कर रहे हैं, लेकिन उनके बाद एक्टिविटीज के बाद मान लो फील्ड विजिट में आने के बाद उनका जो रिफ्लेक्शन होना चाहिए टीचर के मन में तो होना चाहिए कि मैं वो एलओ के बारे में मुझे ले जाना है या तो अलग अलग सब्जेक्ट के साथ मुझे इंटीग्रेट करना है, तो वो रिफ्लेक्शन सेशन जो होनी चाहिए वो स्कूलों में मुझे बहुत कम दिखाई देती है। तो एक्सपीरियंस के बाद रिफ्लेक्शन के बाद फिर से होना चाहिए उनका एप्लीकेशन, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन, और ऐसे ही रिफ्लेक्शन की साइकिल लगाते हुए वो जो एक्सपीरियंस है उनको लर्निंग में कन्वर्ट करने के जो पूरा साइकिल में टीचर छूट जाता है। तो यदि हमें जो नई एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो अपेक्षा रख रहे हैं, इसी अपेक्षा के साथ हम कर पाएंगे। इसलिए मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस के बाद रिफ्लेक्शन सबसे जरूरी है। वो कहीं
इन सब 4 लोगों की बात नहीं करूं, उनके तो बढ़िया से प्रेजेंट किया है, लेकिन कहीं कहीं वो मिसिंग पार्ट रहता है, ऐसा मुझे दिखा है। जी सर। Thank you very much, Joshi Saab. We are trying to conclude. Would you like to make any concluding observations before I conclude the session? सर वही उसको ही कंक्लूडिंग समझ लीजिए। अच्छा, ठीक है, thank you. But I have a responsibility to check with you. That's okay. I think all of you will agree that these 3 presentations are excellent, practice oriented, and the first presentation by Dr. Joseph Emmanuel gave a new dimension to the new thinking and the different ways in which it can be done. And the 3 presentations that followed were more practical implications of how the new ways of teaching learning process can, not only that, this can be introduced, but also it can enhance the learning levels. It was very good. The only thing that we have in India is that these remain mostly as isolated instances rather than getting this back into the system level and try to see that some of these can be generalized. All these are context specific. So therefore, I am not expecting that this will be generalized beyond a point. But at the same time, there is something called transferability of some of these pedagogical dimensions to other schools, so that other students in other schools who are not part of this experiment that you have conducted will also be benefited. That is a place where persons like Joshi Saab in the SCRTs, the diets, and also at the NCRT level, and certainly at the ministry level and CBSE level, etc., becomes important. So these are small micro experiments which have been conducted very successfully. And one thing that should not be forgotten is that there is a lot of effort put in by individual teachers who are taken initiative. So it is very difficult to get that level of commitment from all the teachers. I mean, that is the place where we lag behind in terms of educational achievement in India. How do we make the teachers motivated, not only the students motivated to learn, even make the students learn and making learning a joyful exercise? We need the teachers motivated, and also there is a need to give incentives. I am not talking about the financial incentives or giving special allowances, but at the same time, give them the respect that they deserve in the communities where they live. That makes a lot of difference in terms of the teachers and their achievements, and that will be transferred to the students. Friends, as I mentioned in the beginning, the major challenge that we face today in India is not bringing children to the school, but we do not know is that what happens to the children after they reach the school. And this substantially varies. The differences are among the children who are in the school rather than the children who are in the school and outside the school. So how do we reduce, if not eliminate, these variations in the learning levels and the process of learning, so that we enrich or we academically equip a generation to study further in the higher schools and also in the colleges and the universities, so that we give a base which is strong, give a base which is more realistic, and give a base which is more practical oriented. And these innovations very clearly show that there is immense scope for us to change, even without, none of this innovation needed so many changes in the rules and regulations, nor did I demand so much of financial resources and budgetary allocations. Or in other words, first we should have an optimism and a positive thinking that something can be done even within the given circumstances, both in terms of the financial allocations and also in terms of the personal, physical allocations that we have at the school level. How we can reorganize the resources. That's not financial resources alone, the teacher resources, the student resources, how we can reorganize these resources to produce a better outcome. That becomes one of the important things. That's what we call as the learning crisis is coming to an end. Students start learning, and that through that process, our total learning outcomes are enhanced. Joshi Saab talked about Dave Saab. Dave Saab was a person who introduced minimum levels of learning, which I was referring to
which was introduced at the instance of NCERT in 1992. No? That was the first time we started thinking about whether children are learning something in the schools, or if they are learning, whether the teachers know what they are supposed to achieve at grade 1, grade 2, grade 3, etc. You know, we made a serious effort to unpack what is to be learned at different levels. You know, so I'm happy that Joshi-san is also here and seeing and listening to all these innovations, and he'll be the person who will be able to take some of these innovations forward, at least in his state, and NCERT will be able to capitalize on this for the benefit of several schools within the country. Thank you very much. I don't know what is the next one from NCERT side. You may have the last word. Dr. Professor Anupam. Yes, Thanks. my You have the last word. my last word is thank you very much for accepting our invitation to chair this session at such a short notice, and we thoroughly enjoyed it. And these teachers, we just have only one thing to say: we can stand and clap for their innovations. Thank you very much. We hope all teachers who are watching can get the clear message that it is possible. All that we have to do is to take a plunge, and the joy on children's face will say it all. Thank you very much for all the efforts put in by everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Professor Anupam. Thank you, each one of the speakers. And Joshi sir, thank you. Thank you so Thank much. you, sir. Thank you, sir. Hello. एक मिनट भाई, मैंने वीडियो स्विच ऑफ करें.